Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So today we would be studying fundamental attribution error and self-serving bias. So yesterday I had made a video regarding Kelly's attribution theory. So if you've not watched, do watch it. Yesterday only I have uploaded it. And today we would be studying fundamental attribution error and self-serving bias. So these both things are different, right? So yes, again, I would like to say that like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get updates related to my videos every day. And yes, also follow my Telegram page, HR with Sanchita, in which I post all the links and all the content related to HR, UGC NET and other exams, okay? So now let's see what is this fundamental attribution error. So what you did in attribution theory, right? आपने causes identify किए behavior के लिए कि internal cause थे या external cause थे, right? So attribution was like giving a cause to the behavior, whether the behavior is caused internally. अब internally caused behaviors कौन से होते थे? That are caused related to us, or the dispositional factors, or the personality based factor, or the factors that are under our control. एंड एक्सटर्नली कॉज बिहेवियर्स कौन से होते थे? जो सिचुएशन ने हमें फोर्स किया, राइट? सो द बिहेवियर्स कॉज ड्यू टू अ सर्टेन सिचुएशन, दोज वर एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर, राइट? नाउ yesterday we did it in the Kelly's attribution theory. So now let's see what is fundamental attribution error. अब देखो, the phrase was coined by Lee Ross some years after a classic experiment by Edward E. Jones and Victor Harris. तो ये fundamental attribution error Lee Ross ने coin किया है term, and it is also known as correspondence bias and over attribution effect. So you should know this, that what are the other names of fundamental attribution error? That is correspondence bias and over attribution effect. अब देखो इसका नाम ही क्या है? Fundamental attribution error. That means कि हम बिहेवियर के रीजन को जज करने में एरर कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. वी आर मेकिंग सम एरर. सो व्हाट इज द एरर दैट वी आर मेकिंग? It is the tendency of individuals to overestimate the influence of dispositional factors, personality based factors, internal factors. मतलब जब भी हम किसी का बिहेवियर जज करेंगे तो देन वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स. अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? पर्सनालिटी बेस्ड, डिस्पोजिशनल, राइट? सो वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स and underestimating situational or external factors while judging the behavior of others. So this is the fundamental attribution error. So are we making an error here? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं किसी का बिहेवियर जज करते हुए, राइट? और सिचुएशनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे. वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द सिचुएशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हाइल जजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. सो मोस्टली व्हाट वी आर कंसिडरिंग, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द इंटरनल फैक्टर्स. अब जैसे किसी से गलती हुई, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल की वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन लेट आ रहा है, राइट? अ पर्सन इज कमिंग लेट. तो अगर हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होगा करेंगे तो दैट मीन्स हम सोचेंगे कि जरूर ये खुद ही ना लेट उठता होगा, ये डिसिप्लिन नहीं है, इसको ऑफिस जल्दी आना ही नहीं है, इसका मन ही नहीं करता काम करने का, राइट? सो हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या पता वो किसी ट्रैफिक जैम में फंस गया हो, राइट? या किसी और सिचुएशनल रीजन की वजह से, सिचुएशनल फैक्टर की वजह से लेट आया हो, राइट? क्या पता जिस बस या ट्रेन से आता है वो बैन, मतलब कि आज के लिए वो स्ट्राइक पे हो. सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सिचुएशनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. हम बस उसके इंटरनल फैक्टर्स के बारे में ही सोच रहे हैं कि इस वजह से ही ये लेट होगा. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी डिड इज वी ओवर एस्टिमेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ dispositional personality internal factors and underestimated the influence of situational factors, right? So this is fundamental attribution error. And people have a cognitive bias to assume that a person's actions depend on what kind of a person that person is rather than on the social and environmental forces that influence a person. अब देखो ये क्या बोल रहा है? That लोगों में cognitive bias होता है, लोग ऐसा करते हैं अक्सर जब दूसरों के behavior को भी analyze. So what we do is कि जो भी person कुछ actions या behavior display कर रहा है, हम सीधा उसको किससे link कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, राइट? अगर वो लेट आ रहा है ये तो ऐसा ही पर्सन है, इसकी आदत ही है, ओके? हम ये नहीं देखते कि कुछ क्या पता किसी और वजह से लेट हुआ हो, ठीक है? घर में कोई बीमार हो, राइट? कुछ और प्रॉब्लम हो, राइट? हम ये नहीं सोच रहे हैं,
Okay, so people have a cognitive bias to assume that a person's actions depend on what kind of a person that person is, rather than social and environmental factors that influence the person. Okay, so this is the fundamental attribution error. Now comes another concept. अब ये एक another concept भी है, that is self-serving bias. Okay, so this is also different. Now this is different from fundamental attribution error. अब self serving bias क्या है? अब देखो, इसमें ना हम अपने बारे में सोच रहे हैं. ओके, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम औरों के बिहेवियर जज करते हुए गलती कर रहे थे, राइट? अब हम इसमें क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिंक देयर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स वाइल फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? अब अपने बारे में सोचिए. अब जैसे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो हमने किसी को भी और को क्रेडिट नहीं दिया. हमने कहा ये सिर्फ हम इतने इंटेलिजेंट है इसलिए हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है. सो वी आर लिंकिंग आवर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स. एंड अब सेल्फ सर्विंग बायस तब भी होगा अगर अब हम फेल हो गए, ठीक है, या हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए. So then what we would do in this case, we would tell, now the teacher did not teach us properly, right? And the question paper was out of the syllabus, right? So now we are regarding or giving the credit of our failures to external factors, and when we are getting success then हम अपने आप को ही credit दे रहे हैं, और अगर हम fail हो रहे हैं तो उसे औरों पे डाल रहे हैं. So this is self-serving bias. Okay, so these people generally accept positive feedback and neglect negative feedback. तो obviously ये ऐसे होंगे ही कि अपना positive चीजें तारीफ हो रही है तो ये accept करते हैं, ठीक है, they are very happy that people are admiring them, and in case someone gives them negative feedback then they just neglect it. Okay, so this is self-serving bias, that linking their success to internal factors and failures to external factors, right? So this is self-serving bias. So yes, again, like, share and subscribe to my channel, and follow my Telegram page HR with Sanchita, in which you will get all the links related to my classes.